नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी मैग्नीफाई इंडिया में मैं दीपक कुमार श्रावण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एपीआई 510 का सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। ऑलरेडी एपीआई 510 के 3 चैप्टर में बना चुका हूं, तो आज पार्ट 3 है। पहले पार्ट 00 बनाया गया था जिसमें उसका कोर्स डिटेल के बारे में बताया गया था। बाद में पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलेटेड टू द चैप्टर्स, एपीआई 510 चैप्टर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और अब पार्ट 3 अभी हम लोग शुरू करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं थोड़ा रिव्यू कर दूं कि हम लोग क्या पढ़े थे। नॉर्मेटिव रेफरेंस हम लोग पढ़े थे, टर्म्स, डेफिनेशंस एंड एब्रीविएशंस पढ़े थे, और चैप्टर 4 में हम लोग ओनर और यूजर इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े थे। तो इसमें जैसे मैं आपको बताया था, आप चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8, चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8, चैप्टर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे ओनर यूजर इंस्पेक्शन, और चैप्टर 5 इंस्पेक्शन एग्जामिनेशंस। हम लोग पहले टर्म्स, डेफिनेशंस और नॉर्मेटिव रेफरेंस पढ़े थे। तो चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8, 9 इसमें कवर नहीं होता है। आपका एग्जाम में चैप्टर 9 नहीं आएगा। ओके, चैप्टर 9 आप नोट डाउन करके रखिए। चैप्टर 9 आपको एग्जाम में नहीं आएगा, और आपका जो एनेक्सर है, एनेक्सर ए और बी आएगा, सी डी ई एग्जाम में आपको नहीं आएगा। तो चैप्टर 5, 6, 7 से ऑलमोस्ट आप यू कैन इमेजिन फ्रॉम चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8 यू कैन गेट ऑलमोस्ट 50 to 55 क्वेश्चंस। चैप्टर 5, 6, 7 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर 3 जो मैं पढ़ाया, टर्म्स एंड डेफिनेशंस, उसमें आपको 4 to 5 क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ओनर एंड यूजर इंस्पेक्शन, इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इधर क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे मैं उसको हाईलाइट किया हूं, और मैं आपको बताएगा भी, वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दैट वन। तो लेट्स स्टार्ट। ओनर एंड यूजर इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस। ओनर एंड यूजर कौन होता है? द परचेजर। मैं आपको पहले भी बताया था, ओनर एंड यूजर इज द परचेजर। ओके, एंड ओनर एंड यूजर इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो ओनर एंड यूजर ऑफ प्रेशर वेसल सेल एक्सरसाइज कंट्रोल ऑफ द वेसल एंड प्रेशर रिलीफ डिवाइस इंस्पेक्शन प्रोग्राम, inspection frequencies and maintenance, and is responsible for the function of authorized inspection agency in according to the provision of this code. एक ओनर एंड यूजर सोली ओनरशिप लेता है, या हम लोग जैसे पढ़े थे इंस्पेक्शन एजेंसी कैसे बनाया जाता है, इंस्पेक्शन एजेंसी का ऑथोराइजेशन किसके पास रहता है। एक प्रेशर वेसल अगर बना, जैसे हम लोग लास्ट चैप्टर में अगर आप पढ़े होंगे तो हम लोग डेफिनेशन में पढ़ रहे थे, रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेशन कौन कर सकता है। तो सिमिलरली इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ओनर एंड यूजर किसको किसको डिफाइन करता है, और उसका क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। ठीक है, तो ओनर एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशन का रेस्पॉन्सिबल क्या रहता है? फॉर डेवलपिंग, डॉक्यूमेंटिंग, implementing, executing and assessing pressure vessel and pressure relieving devices. ओके, प्रेशर रिलीविंग डिवाइस और प्रेशर वेसल का एक प्रोसीजर डेवलप करने का, ठीक है, एक डॉक्यूमेंटिंग प्रोसीजर डेवलप करने का, एक इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा, जो प्रोसीजर डेवलप हुआ है वो प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, एग्जीक्यूट होने के बाद उसको असेसमेंट कैसे किया जाएगा, जो एग्जीक्यूट हुआ है वो बराबर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, सो दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ owner and user inspection organization. So you will get a question of this one: what is the roles and responsibilities for a inspection organizations? Okay, there may be 4 and 5 options where something is missing, like they write developing, documenting, implementing. Somewhere it is developing, documenting, implementing, executing and assessing. So you have to choose this term. Okay, all the 5 terms. So there is another one question which will come. Okay, management shall have an appropriate requirement for work process to ensure that inspector have an annual vision. Okay, annually you have to check your eyes for the inspectors. Okay, inspector, when I say it is authorized pressure vessel inspector. Whenever the inspector term is coming, हम लोग पढ़े थे चैप्टर 3 में पढ़े थे, जहां पर इंस्पेक्टर का टर्म आ रहा है वो होता है ऑथोराइज्ड
प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर। और एक टर्म है वो है एग्जामिनर, हम लोग उसके बारे में भी पढ़े थे। एग्जामिनर और इंस्पेक्टर, दिस इज टू डिफरेंट थिंग्स, यू डोंट मर्ज बोथ। ओके, तो इंस्पेक्टर क्या करता है, he has to be annually उसका विजन चेक होना चाहिए एंड कैपेबल ऑफ रीडिंग J1 letters on standard Jaeger type chart for near vision. Okay, you will get a questions, possible question. So MOC, management of change क्या होता है? Okay, you will get one question from MOC. The owner and user is responsible for implementing and executing an effective MOC process that review and control changes to the process and to the hardware. मान लीजिए कोई प्रोसीजर, कोई स्टैंडर्ड बन गया बाय द ओनर एंड यूजर, बनने के बाद ड्यूरिंग प्रोसेस अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो उसको मॉडिफाई किया जाता है, तो दैट मॉडिफिकेशन नीड टू बी approved by the owner, the purchaser, that is called management of change. Okay, मैनेजमेंट एक बार एक डिजाइन अप्रूव होने के बाद अगर ड्यू टू सम फील्ड कंस्ट्रेंट, कुछ प्रोसेस कंस्ट्रेंट, ऐसे इसी के लिए अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है प्रोसेस, मान लीजिए कुछ टेम्परेचर, कुछ फ्लो, इसके लिए हमको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है प्रेशर वेसल को, तो उसके लिए प्रियर अप्रूवल चाहिए, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज, और वो ओनर और यूजर ही देता है। ठीक है, टू एबल an effective MOC review process is vital in the success of any pressure vessel integrity management program. Okay, to be able to address issues concerning the adequacy of the pressure equipment design and current addition, to anticipate changes in corrosion or any other type of damage, and to update the inspection plan and records to account for those changes. When pressure equipment integrity may be affected, the MOC process shall include the appropriate inspection, material, corrosion, and mechanical engineering experience and expertise in order to effectively identify pressure equipment design issues and forecast what changes might affect pressure vessels integrity. Okay, so this is मोटा मोटी मैं आपको जो बोला, इसके लिए सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं। एंड what additionally what happen in order to effectively identify pressure equipment design issues. Okay, अगर कुछ डिजाइन इश्यूज में फर्क होता है, एंड फोरकास्ट व्हाट चेंजेस माइट इफेक्ट प्रेशर वेसल इंटीग्रिटी, तो उसके लिए एक असेसमेंट किया जाता है कि अगर हम लोग जो चेंज कर रहे हैं उसमें क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या डिजाइन इंप्लीकेशन हो सकता है प्रेशर वेसल के ऊपर, वो भी हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। चेंजेस टू द हार्डवेयर एंड द प्रोसेस शैल बी इंक्लूडेड इन द एमओसी प्रोसेस। मैं जैसे पहले बताया, अगर कोई प्रोसेस में चेंज हो रहा है, अगर कुछ हार्डवेयर या प्रोसेस में चेंज हो रहा है, तो उसको एमओसी प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फॉर एंश्योरिंग इट्स इफेक्टिवनेस। The owner and user should implement and maintain an effective program for creating, establishing, and monitoring integrity operating windows. Integrity operating windows are implemented to avoid process parameter exceedance that may have an unanticipated impact on pressure equipment integrity. IOW, integrating operating windows. कब टेस्टिंग करना है, इंटरनल, एक्सटर्नल, ओके, ऑन स्ट्रीम, कॉरोजन अंडर इंस्पेक्शन का, सर्विस कंडीशन में, तो वो क्या होता है, वो कौन डिफाइन करेगा, ओनर एंड यूजर ही डिफाइन करेगा। सो द ओनर एंड यूजर शुड इंप्लीमेंट एंड मेंटेन एन इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग, एस्टेब्लिशिंग एंड मॉनिटरिंग इंटीग्रेटिंग ऑपरेटिंग विंडोज। तो ओनर और यूजर ही उसको डिफाइन करना चाहिए। Future inspection plans and intervals have historically been in pure measure corrosion rates resulting from past operating conditions. तो यूजुअली क्या होता है, जब प्रेशर वेसल सर्विस में है और वो सर्विस में रहने के टाइम में हम लोग उसका पास्ट का परफॉर्मेंस जो कैलकुलेट करते हैं, जो पास्ट का बिहेवियर देखते हैं कि उसमें कैसे परफॉर्म कर रहा था, उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन इंटरवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हम लोग एक इंस्पेक्शन इंटरवल का ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी कैसा रहना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द पास्ट परफॉर्मेंस। सो फ्यूचर इंस्पेक्शन प्लान एंड इंटरवल हैव हिस्टोरिकली बीन बेस्ड ऑन प्रियर मेजर्ड कॉरोजन रेट्स। कॉरोजन रेट कितना है, पहले टी प्रीवियस कितना था, थिकनेस कितना था, अभी टी एक्चुअल कितना है, उसी हिसाब से हम लोग कितना साल काम किया है, उसी हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करके देखते हैं कि करोजन रेट कैसा हो रहा है, और पास्ट ऑपरेटिंग कंडीशन। विदाउट एन इफेक्टिव आईओडब्ल्यू
and process control program, there is no warning of change operating condition that could affect the integrity of the equipment or validation of the current inspection plan. Deviation from and change of trends within established IOW limits should be brought to the attention of inspection and engineer personnel, so they may modify or create new inspection plan depending upon the seriousness of the exceedness. ठीक है, तो ये क्या बोलता है? Everything depends upon whatever the data we have collected, whatever the corrosion rate happened from past few years. So based on those data, we have to find out, we have to plan our future inspections. So IOW should be established for process parameters, both physical and chemical, that could impact equipment integrity and not properly controlled. So examples of process parameter includes temperature, pressure, fluid. ये जो pressure parameters हैं, इसमें क्या क्या changes आते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग decide करते हैं. Fluid velocity, pH, flow meter, chemical or water injection rates, level of corrosion constituents, chemical compositions, etc. So IOW for key process parameters may be both upper and lower limit established as needed. Particular attention to monitor IOW should be provided in the during startup, shutdown, significant process offsets. So this is the definition of engineer. ये आपको एक questions आएगा, there is most possibility question आने का chance है. So the pressure vessel engineer is responsible for the owner and user to activities involving design. So बोलेगा design, engineering review, analysis or evaluation of pressure vessel and pressure relieving devices is done by whom? By the engineer. It is important, okay? You have to remember this term, engineer. There is most probably this question will come. Repair organization. Repair organization क्या करता है? The repair organization is responsible to the owner and user and shall provide the material, equipment, QC and workmanship that is necessary to maintain and repair the vessel or pressure relieving devices. This is a question. Okay. Hopefully you will get these questions. Inspector. Okay. The inspector is responsible for the owner and user to assure the inspection, NDE, examination, pressure testing activities meet to API 510 code. तो इसमें तीन टर्म हो गया, आप इसको याद रखो. There are three terms now. One is engineer, one is inspector, and another one is, हम लोग तीन पढ़े थे. इंस्पेक्टर मतलब ऑथोराइज्ड प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर, और एक होता है एग्जामिनर. एग्जामिनर और इंस्पेक्टर दोनों डिफरेंट टर्म है, ठीक है. तो इंजीनियर का क्या रोल रहता है? इन्वॉल्विंग डिजाइन, इंजीनियरिंग रिव्यू. बट इंस्पेक्टर इज डूइंग फॉर द इंस्पेक्शन, एनडीई, रिपेयर्स and pressure testing activities made for API 510 codes. Okay, so the inspector shall be directly involved in the inspection activities, especially visual inspection, which is most cases will require field activities to ensure that the procedure and inspection plans are followed, but may not assisted in performing inspection by other properly trained and qualified individuals who are not inspectors. Okay, example, engineers, examiners and operating maintenance personnel. Okay, however, ND results shall be evaluated and accepted by the inspectors. इंस्पेक्टर उसको एनडी रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर सकता है. विल मेक, इसमें आपको एक क्वेश्चंस आएंगे, इंस्पेक्टर, एग्जामिनर एंड इंजीनियर. यू विल फाइंड 100% ए क्वेश्चन इन API 510. एग्जामिनर देखें, हम लोग लास्ट इंस्पेक्टर और इंजीनियर के बारे में पढ़े थे, तो अभी आ गया एग्जामिनर. एग्जामिनर क्या करता है? द एग्जामिनर शैल परफॉर्म एनडी इन अकॉर्डेंस विद द जॉब रिक्वायरमेंट. एग्जामिनर का काम है एनडी करने का इन अकॉर्डेंस विद द जॉब रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. So examiner does not need API inspector certification, very important. Okay, एक एग्जामिनर बनने के लिए मुझे API इंस्पेक्टर सर्टिफिकेशन होना जरूरी नहीं है, and does not need an employee of the owner or user also. So you will find a question from examiner, engineer and inspector. So be careful and highlight and read it very carefully wherever I have highlighted. ठीक है. Examiner does not need to be trained and competent in the ND procedure. Very right. Okay, उसको ND level 2 होने का जरूरत नहीं है. Being used to be may be required by the owner and user to prove competency by holding certification in those procedures. Examples of certification that may be required. Maybe, it is not must. It's a may. May be required is SNDTC 1A, CP 189, CGSB and AWS QC1. So inspector conducting their own examination with ND techniques shall be appropriately qualified in accordance with owner and user requirements. So the examiner's employee shall maintain certification record. This is a question various times in questions in exam it comes. Who will keep
the certification records, okay, the examiner of the examined employees including dates and results of personal qualifications. तो आपको ये क्वेश्चंस आने का बहुत चांस है, और बहुत बार मैं देखा हूँ ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, एपीए एग्जाम में. हु विल कीप द examiner details, certification details and its result of personal qualification? The examiner employer, okay, the examiner employer shall maintain. Shall मतलब must है, ठीक है. The examiner employer shall maintain, it's a must. The records shall be available to the inspector who is responsible for the owner. It is again one important term. The records shall be available whenever he need it. He has to produce the record. Okay. All ND examiners are properly qualified for the work they perform. So inspection organization audits. Each owner and user organization should be audited periodically to determine if the authorized inspection agency is meeting the requirement of this inspection code or not. Yeah, this is right. So however, periodic self-auditing by those directly involved in the site inspection organization is also recommended. This is one of the questions came last time. Periodic self-auditing is required for organization to check whether the requirements as per the procedure are met or not. That's why self-auditing is also recommended. चैप्टर 5 में आपको जैसे बताया था, चैप्टर 5, 6, 7, 8 चार चैप्टर, ठीक है. 5 हो जाएगा इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन एंड प्रेशर टेस्टिंग प्रैक्टिस. इसमें हम लोग हाइड्रो टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. हाइड्रो टेस्ट का प्रैक्टिस, प्रेशर टेस्टिंग कैसे किया जाता है, हाइड्रो टेस्टिंग का प्रेशर टेस्टिंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, वो ओपन बुक क्वेश्चन है, ठीक है. और चैप्टर 6 आएगा जनरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ इंस्पेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे. बाद में चैप्टर 7 आएगा इंस्पेक्शन डाटा इवोल्यूशन एंड एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग. एंड चैप्टर 8 आएगा रिपेयर अल्टरनेशन एंड रीटेस्टिंग ऑफ प्रेशर वेसल्स एंड प्रेशर लिविंग डिवाइसेस. मैं आपको जैसे पहले बताया, चैप्टर 9 जब एपीए 510 कोर्स में नहीं आता है, ऐसे एनएक्स ए और एनएक्स बी आता है, और बाकी सीडीई नहीं आता है. एनएक्स ए और एनएक्स बी ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, आपको देखे होंगे. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5. 5, 6, 7, 8 से यू विल गेट मिनिमम 55 to 60 क्वेश्चंस. So, an inspection plan shall be established for all pressure vessel and pressure relieving devices with the scope of this code. Development of an inspection plan. कौन inspection plan develop करेगा? There is a question. Must question. Okay. The inspection plan shall be developed by the inspector and or engineer. Option में रहेगा inspector, inspector engineer, owner inspector, inspector and examiner. So you have to must write inspector and engineer. Okay. Next question. बहुत बार आया एग्जाम में. A corrosion specialist shall be consulted when needed a designated potential damage mechanism and specific locations where damage mechanism may occur. तो एग्जाम में आएगा during preparation during developing an inspection plan, who need to be contacted? The inspector engineer, चाहे ऐसे 3-4 ऑप्शन रहेंगे, और उसमें एक ऑप्शन रहेगा corrosion specialist. So corrosion specialist must be conducted. Okay. The inspection plan is developed from the analysis of several sources of data. Equipment shall be evaluated based on the presence of potential type of damage mechanism. The method and the extent of NDE shall be evaluated to ensure that the specified technique can adequately identify the damage mechanism and the extent of severity of the damage. मिनिमम कंटेंट ऑफ द इंस्पेक्शन प्लान, इसमें एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें एक कंटेंट रहेगा व्हिच इज नॉट बिटवीन ए टू जी, वो वाला रखा हुआ, आपको उसको निकालना है. व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द इंस्पेक्शन प्लान, व्हिच इज नॉट ए मिनिमम कंटेंट ऑफ द इंस्पेक्शन प्लान करके डाला होगा, जिसमें एक कंटेंट रहेगा जिसको आपको यहां से निकालना है. इधर क्या क्या कंटेंट रहेगा? डिफाइन द टाइप ऑफ इंस्पेक्शन नीडेड, इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑन स्ट्रीम, सीयूआई. ओके. तो आइडेंटिफाई द नेक्स्ट इंस्पेक्शन डेट फॉर ईच इंस्पेक्शन टाइप. हर इंस्पेक्शन का, इंटरनल इंस्पेक्शन कब होगा, एक्सटर्नल कब होगा, विजुअल कब होगा, इसका एक डेट कब होगा, उसको हम लोग को एक इंस्पेक्शन प्लान में इंक्लूड करना पड़ेगा. डिस्क्राइब द इंस्पेक्शन एंड एनडी टेक्निक, कौन सा इंस्पेक्शन और कौन सा एनडी टेक्निक यूज किया जाएगा. डिस्क्राइब द एक्सटेंट एंड लोकेशन ऑफ द इंस्पेक्शन एंड एनडी. ओके. कितना दूरी तक इंस्पेक्शन किया जाएगा, ऐसा नहीं कि हम पूरा का पूरा वेसल चेक करेंगे. डिस्क्राइब द सरफेस क्लीनिंग रिक्वायरमेंट नीडेड फॉर इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशंस
and describe the requirement of any needed pressure test, type of test, test pressure and duration, and describe the previously planned repairs. So these are the requirement, minimum requirements. Okay. So RBI रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन क्यों किया जाता है 580 में, ठीक है, API 580 is RBI. RBI हम लोग क्यों करते हैं? The probability assessment shall be based on all form of damage that could reasonably be expected to affect a vessel in any particular service. आरबीआई का कुछ असेसमेंट है, प्रोबेबिलिटी असेसमेंट है, आगे में हम लोग और असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे. आरबीआई हम लोग इसलिए करते हैं कि we are expecting some type of problem will happen. Before that, we need to take some precautionary measures and do some testing and everything, and do some changes or do some additional activities on the pressure vessels in order to enhance the life. Okay. तो प्रोबेबल आरबीआई क्या बोलता है? आरबीआई कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन इंस्पेक्शन इंटरवल एंड द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ फ्यूचर इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशंस. हमको कब फ्यूचर में इंस्पेक्शन करना है बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, उस हिसाब से आरबीआई डिसाइड करता है कि फ्यूचर इंस्पेक्शन कब होगा. आरबीआई असेसमेंट डिटरमाइंस रिस्क बाय कंबाइनिंग द प्रोबेबिलिटी एंड कंसीक्वेंस ऑफ द इक्विपमेंट फेल्यूर. प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, एंड कंसीक्वेंस क्या हो सकता है दैट इज फ्यूचर प्रोडक्शन. उसको हम लोग एक असेसमेंट करके निकालते हैं कि आरबीआई का असेसमेंट कैसे होना चाहिए. When a owner or user choose to conduct RBI assessment, it shall include a systematic evaluation of both probability of failure and the consequence of failure in accordance to API 580. ठीक है. तो अदर क्या होता है? कंसिक्वेंस असेसमेंट्स. कंसिक्वेंस असेसमेंट में क्या होता है? द कंसिक्वेंस ऑफ ए रिलीज इज डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोसेस फ्लूइड कंटेंट इन द इक्विपमेंट. उसमें कितना प्रोसेस फ्लूइड है उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है. इसमें ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं देखा एपीआई 580 का रिलेटेड चैप्टर 5 में, एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके. The consequence assessment shall consider the potential incident that may occur on the result of fluid release, the size of a potential release and the type of potential release. Okay. So documentation, क्या क्या documentation किया जाता है? It is essential that all RBI assessments to be thoroughly documented in accordance to API 580 chapter 7 section 7. Okay. तो क्या क्या होते हैं इसमें? The result can be used to establish the vessel inspection plan and better define the following: the most handy methods, the internal and external on-stream inspections, the need of pressure vessel testing and after damage mechanisms. तो ये सब हम लोग उसको आरबीआई में डॉक्यूमेंट करते हैं. आरबीआई असेसमेंट के टाइम में ये सब चीज हम लोग डॉक्यूमेंटेशन यूजुअली करते हैं. प्रिपरेशन फॉर द इंस्पेक्शन. ओके. इंस्पेक्शन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 व्हिच इज इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन एंड प्रेशर टेस्टिंग. तो इंस्पेक्शन पहले हम लोग समझे, बाद में हम लोग इंस्पेक्शन के लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे. सेफ्टी प्रिकॉशन. देयर इज ए मस्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ इंस्पेक्शन. यू विल फाइंड वन क्वेश्चन फ्रॉम सेफ्टी प्रिपरेशन. ओके. मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट इट डाउन. Safety precautions are important in pressure vessel inspection and maintenance activity because some process fluids are harmful for human health and pressure vessels are enclosed space and intervals involved in exposure of all hazards and confined space entry. Okay. So इसमें आपको आएगा, yes, this is the question. When individuals are inside a vessel, all person working around the vessel should be informed that people are working inside the vessel. Individuals working inside the vessel should be informed when any work is going to be done on the interior or exterior of the vessel while they are inside the vessel. You will find a question. Exactly, you will find a questions. Okay. Then for the equipment, it is probably they will get a questions. Okay. All tools and equipments and personal protective equipments used during vessel work, inspection and pressure testing, repair and alternation should be checked prior to use. Personal protective equipment shall be owned and when required either by regulations and owner or user or the repair organization. Refer to API 572 section 8 for more information on the specific tools. You will get a questions here. Okay. This is closed book question. This is closed book question. 100% will find a closed book question. Okay. Vessel entry. This is a question must. This is a question. Okay. So the vessel entry is a closed book questions. So prior to entering the vessel shall be positively isolated. This is a question must.
from all sorts of liquid, gas, vapors, radiation and electricity. The vessel shall be, again, another one question, drained, purged, cleaned, ventilated and the atmosphere inside the gas test before it is entered. Okay, उसका गैस टेस्टिंग करना पड़ेगा, कितना ऑक्सीजन है, क्या है, कौन सा hazardous गैस है, वो चेक करना पड़ेगा. Vessel entry is a must question. You have to remember the words exactly. जो लिखा है उसको exactly आप याद रखो. Record review. This is another one questions. Okay, you will get a closed book questions. It is CBT, closed book CBQ. Okay, closed book question. It is a closed book questions. क्या है? Before performing any of the required API 510 inspection, inspectors shall familiarize themselves with prior history of the vessel for which they are responsible. So record review is most important and you will get a question from this one. Inspection of different types of damage mechanism and failure modes. Pressure vessels are susceptible to various types of damage by several mechanisms. Okay, damage mechanism जब आप लोग पढ़ेंगे API 570, डैमेज मैकेनिज्म कौन सा है API 571. जब हम लोग डैमेज मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हम लोग प्रेशर वेसल का बहुत सारे कम से कम 15 डैमेज मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, हम लोग API 570 का कोर्स जब कर रहे थे तब कुछ डैमेज मैकेनिज्म के बारे में पढ़े थे, जैसे एटमॉस्फेरिक कोरोजन हो गया, ब्रिटल फ्रैक्चर हो गया, हाँ, कस्टिक कोरोजन हो गया, कस्टिक स्ट्रेस कोरोजन हो गया, कस्टिक क्लोराइड स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग हो गया. ऐसे हम लोग कुछ कोरोजन के बारे में पढ़े थे. तो सिमिलरली for pressure vessel it is more, we will add more 4 or 5 damage mechanism और उस टाइम हम लोग देखेंगे. Okay. So pressure vessels are susceptible to various types of damage by several mechanisms. Inspection techniques for each of the potential damage mechanism that exist for each pressure vessel should be part of the inspection plan. API 571 describes common damage mechanism and inspection technique to identify them. General and localized metal loss, surface connected cracking, subsurface cracking, high temperature micro fissuring and micro bolt formation cracking, metallurgical changes and blisterings. So the presence of potential of damage in a vessel is dependent upon its material and construction design, construction and operating conditions. Okay, इसमें मेरे को नहीं लगता है कुछ क्वेश्चंस आएंगे. Okay, this is the questions. Okay, this is the question you will get. A must question. Vessel in cyclic service, cycle of pressure, temperature and combination of both pressure and temperature should be evaluated for potential fatigue cracking failures and have appropriate inspection planned. Typical examples of vessels in cyclic service includes coke drum, mole service, pressure swing absorbers. You will get a questions. Okay. Now this is the most important, that is type of mechanism, inspection and surveillance of pressure vessels. क्या क्या हम लोग inspection करते हैं. Okay, you will get a questions open book और close book must question. Okay, क्या क्या inspection होता है? Internal inspection, on stream inspection, external inspection, thickness inspection, CUI inspection. CUI क्या है? Corrosion under insulation, operator surveillance. So these are the inspection activities it happens. Okay, so pressure vessel internal inspection. क्या internal inspection क्या है? The internal inspection shall be performed by inspector. First question. Okay, close book. In accordance with the inspection plan. Close book question. Other properly qualified inspectors or NDA examiners. Close book questions. May assist the inspector but not replace. Close book question. In the internal inspection when approved and under the direction of the authorized inspector. This sentence is very important. You will find sometimes 2-3 questions coming from a single statement. Okay. Manway or inspection point port inspections can be substituted for internal inspection only when the vessel is too small or to safely enter, or all internal inspections can be clearly seen and adequately examined. A primary goal of the internal inspection is to find damage that cannot be found by irregular monitoring of external CMS. CML क्या है? Conditioning monitoring locations. कहीं जहाँ जहाँ पर कुछ ऐसे लोकेशन है जिसको हम लोग को चेक करना पड़ता है पीरियडिकली, बिकॉज दोज आर ससेप्टेबल टू डैमेज, तो उसको हम लोग कंडीशनिंग मॉनिटरिंग लोकेशन CML बोलते हैं. ठीक है. स्पेसिफिक एनडी टेक्निक, दिस इज इंपॉर्टेंट, ए क्वेश्चन विल कम. Wet fluorescence magnetic particle testing, alternating current testing, eddy current testing and PT may be required for the owner and user. Okay.
Internal deposit and linings. There is 2-3 terms. The inspector in consultation with corrosion specialist is very important word. Okay, ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है. Should determine. Okay, it is not mandatory but should determine when it is necessary to remove deposit or lining to the perform adequate inspection. Whenever operating deposits such as coke are normally permitted to remain on a vessel surface, it is important to determine whether these deposits are adequately protect the vessel and do not cause any deterioration. So we need a corrosion specialist in suggestion before proceeding for internal deposits or linings to do any inspection for the internal deposit and linings. Okay, for on-stream inspection of pressure vessels, the on-stream inspection may be required by inspection plan. उसके लिए हमको एक inspection plan बनाना पड़ेगा. All on-stream inspections should be conducted by either an inspector or examiner. Again a question. Who will do the on-stream inspection? Okay, either by inspector or examiner. लिखा होगा inspector and examiner, inspector, examiner, inspector or organizer. So there is exam में क्या होता है? They are giving you a confusion answer so that you have to remember it. You have to read it very carefully so that you will be not confused in the exam. Neither you will see oh it is an inspector or examiner. So a small word we have to read it and remember it very carefully. All on-stream inspection work performed by an examiner shall be authorized and approved by the inspector. When on-stream inspection of the pressure boundary are specified, the appropriate ND technique shall be specified to detect the damage mechanism and their associated flaw types identified in the inspection plan. External inspection कैसे होता है? The visual external inspection is normally performed by an inspector. One more question. However, other qualified personnel may conduct the external inspection when acceptable to the inspector. Each and every word is very important, so read it very carefully. In such cases, the persons performing the external inspection in accordance to 510 shall be qualified in accordance in appropriate training and specified by the owner and user. External inspections are performed to check the condition of the outside surface of the vessel, insulation systems, painting and coating, support, associated structures, and to check the leakage, hotspot, vibrations. Okay. So external inspection में और क्या किया जाता है? We check the bulging, out of roundness, sagging, and distortion also. Okay. Inspection of buried vessels. Buried vessel में हम लोग यूजुअली क्या चेक करते हैं? कैथोडिक चेक करते हैं. So buried vessels shall be inspected to determine their external surface condition. The inspection interval shall be based on the assessment for the cathodic protection system. Okay, cathodic protection के बारे में हम लोग buried pressure vessel के बारे में pressure vessel में ज़्यादा नहीं है, मगर cathodic protection के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे APS 653 में. Okay, impressed current क्या है, sacrificial का एनोड क्या है, वो सब के बारे में हम लोग 653 में ज़्यादा पढ़ेंगे. इसमें खाली तो थोड़ा दिया गया है कि पर buried vessels हम लोग कैसे चेक करते हैं, inspection of buried vessels. Thickness examinations, thickness measurement are taken to verify the thickness of vessel components. Okay, UT thickness measurements. The data is used to determine the corrosion rate and remaining life of the vessels. Thickness measurements हमको क्या पता चलता है? Corrosion rate and remaining life of the. ये open book questions है. Okay, इसका calculations हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग corrosion rate कैसे calculate करते हैं, remaining life कैसे calculate करते हैं, T previous, T actual, इसका मतलब क्या है, उसको कैलकुलेट करके हम लोग कैसे करोजन रेट और रिमेनिंग लाइफ निकाल सकते हैं. तो ये सब क्वेश्चंस हम लोग आगे में पढ़ेंगे और ओपन बुक क्वेश्चंस है, मस्ट इन एग्जाम. द इंस्पेक्टर शैल रिव्यू द रिजल्ट्स ऑफ थिकनेस इंस्पेक्शन डाटा टू लुक फॉर पॉसिबल anomalies and should consult to the corrosion specialist. See, a corrosion specialist is always consulted when the short-term corrosion rate of change significantly from the previous identified rate up to determine the cause. Appropriate response to accelerate corrosion rate may include additional thickness readings. The owner and user is responsible to assure that all individuals taking thickness readings are trained and qualified in accordance with the applicable procedure used during the procedure. APA 570 section 9.2. ठीक है दोस्तों, सेक्शन 5 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. सेक्शन 5 को हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करेंगे और सेक्शन 5 से और पॉसिबल क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको देखेंगे. आप मैं जहां पर मार्किंग किया, जहां पर हाईलाइट किया है क्वेश्चंस आएंगे, आई स्ट्रांगली बिलीव 100% वो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और आगे एग्जाम में आएंगे भी.
मैं आपको जैसे बताया चैप्टर 5, 6, 7, 8 से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। तब आप हाईलाइटेड चीज को अच्छे से पढ़िए, उसका नोट डाउन करिए और उसको एग्जैक्टली याद रखने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि एक एक छोटा वर्ड भी आपको एग्जाम में कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी उनको परामर्श दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।